कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। ओके। No weapon that is formed against thee अगेंस्ट दी shall prosper. शैल, लफ्ज प्रॉस्पर पे जोर दे, Shall prosper. prosper. So this makes very clear to us that weapons are formed. God is not saying कि मैं भी promise कीता कि weapons नहीं बनाएंगे. When you read the word prosper, it does not include कि a weapon ताड़े ते hit नहीं करेगा. Weapon is formed and weapon is sent toward, released toward you. छोड़ दिया गया, आपकी तरफ फेंका गया. And it hits you. God promised कि a prosper नहीं होएगा. Prosper mean खुशहाल नहीं होएगा, कामयाब नहीं होएगा, completion जो है टारगेट. No, let me teach you. Spirit realm में ऐसे weapons हैं जिसकी बाबत लिखा गया चोर नहीं आता चुराने मार डालने. So the target is to kill you, ultimate. If you are killed by the spiritual attack, इसे बोलते हैं prosperity of the weapon.